Hi guys, so today we have another chartered accountant, Sai Sweta, who joined our GSPrime program and she got into BDO India off campus in statutory audit. So she will be sharing her experiences of campus, off campus, and what were the challenges she had faced, and also about her placement finally. All up to you, Sai Sweta. Thank you, sir, for the opportunity. First of all, I thought I would I got off-campus interviews. I cleared off-campus interviews also before appearing for on-campus. But I rejected them all in off-campus. Then I went to campus where I could not be placed. Then I felt very depressed because I left the opportunities. So Then which opportunity? again, What was the what was that opportunity which Gen- you rejected? I was selected in Genpact and the PwC India. Okay, okay, So I thought of going into the global. okay, So in campus, I got the opportunities in PwC SDC and EYGDS. okay. In EYGDS, I am able to clear the technical, but there was a HR round connecting to it. Due to some disturbances, I'm not able to clear that HR round. I'm not able to attend that call, and I lost the opportunity there also. So I selected in BDO India, two Great. So, technicals, great. and So you got selected in PwC, BDO, and Genpact also. You rejected that, and then finally, it's good. I think ultimately what happens, it happens for the good reason. Okay, because compared to offshore India, you will get much more exposure. Okay, and like work from home, if you're thinking nobody is giving nowadays work from home. So every week for nowadays, whether it's SDC or EY they're all bringing to office only. So those things are not happening. I heard from many people now they are bringing who totally work from home is gone, and all of them are bringing to office only. Every day you means they will do a hybrid culture like that, and there will not a relaxation with respect to that. Okay, okay. About a mentorship program, like how it did help. Okay, clear so many interviews. Impact. uh, we had so many sessions, long hour sessions, and sir gives the Excel sheets. In the session itself, we will learn what main important questions. Most of the questions will be same, all the big fours, uh, specific to the domain, and we will be discussing all the questions, and we will be answering also in the sessions. So he will be like an interviewer, and he'll ask the questions, and we will be practicing as well as we'll be saying them, and this helped me a lot. We can overcome the stage fear also there. We Even though we know the concept, we might not be able to express it. This is the main problem we all have, so we will overcome that. I And wanted to say, great. You continue what you say. Huh. no, sir, that's One of the guys, okay, he also rejected PwC India, okay, earlier. He did not get a job till now. No, it is great you got the job because at present, what I know, what data is coming, okay, around 66% CAs still are not getting jobs, and the vacancies have gone very down considerably. So it is very those who even first attempt CAs are not getting jobs right now, and even rank holders because the vacancies are very low. March, April, May, the vacancies are the vacancies. It was very high when you became a CA. That time the vacancies were there, but considering now March, April, I think so. Banks, I think economic crisis, maybe that is the case, but the vacancies are very lower. So that is a great thing. But the thing is that the confidence that you got the interview and you means rejected it, that means you had the confidence कि हम clear कर लेगा interview यहाँ पर मैं, that is great because generally what I see, okay, कोई reject करता नहीं. तो it was something strange. हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा चीज है. तो आपको था कि आप इंटरव्यू फिर भी क्रैक कर देगा यहाँ वहां पर जाके, तो दैट कॉन्फिडेंस वाज देयर. जनरली पीपल डोंट डू इट, पर आपके पास कॉन्फिडेंस था कि मेरे को और मिल सकता है. So that risk you took, right? Maybe it was not the right or wrong decision, but the thing is that you had the confidence, okay, कि हाँ मेरे पास आने के बाद हम रिजेक्ट कर सकता है because हमको लग रहा है हम क्लियर कर देगा. Okay. You also did in Deloitte USI वर्जन राउंड में आपका नहीं हो पाया था, right?
वर्जन राउंड में नहीं हो पाया, तो Yes, इट्स अ sir. वेरी स्ट्रेंज, हाँ, तो इट वाज वेरी स्ट्रेंज जर्नी। सम इंटरव्यूज यू लास्ट मोमेंट में जाके नहीं हुआ, पीडब्ल्यूसी में हो गया, जेनपैक्ट हो गया, फिर कैंपस में आपका नहीं हुआ, फिर बीडीओ में फाइनली हो गया। तो समथिंग विच कैन बी लर्न, ओके, कि इंटरव्यूज आर वेरी अनसर्टन, एनीथिंग कैन हैपन, यू शुड बी वेरी मच मींस फोकसिंग ऑन मींस कि अपने आप को इम्प्रूव किया जाए, एंड एनीथिंग कैन हैपन ऑन दैट डे। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू योर बेस्ट, एंड अगर ऑफर लेटर आ जाता है आपके हाथ में, so you should not say no. I think so, that is very important, I feel. Yeah, I say to Divyan कि एटलीस्ट मेरे से डिस्कस कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, बिकॉज बहुत लोगों का मैंने देखा है जिनको ऑफर लेटर आ जाता है और उन्होंने अगर रिजेक्ट कर देता है, फिर 6-6 महीना तक नहीं लगता है, एंड दैट इज अ बिग, मतलब होता है ना, रात को नींद नहीं आता है। आई हैव सीन दिस Yes, हैपनिंग। sir. इट इज वेरी, हाँ, और पीडब्ल्यूसी का रिजेक्ट करना ऑफर लेटर तो थोड़ा सा वो हो जाता है, आपको मतलब अजीब सा लगने लग जाता है, आई मेड अ बिग ब्लंडर आउट हियर, एंड दैट इज Oh अ my. बिग, it is not a good feeling. I can understand. Okay, but I'm telling you, you have got into a very good firm, which is Big Five only. Generally, Big Five. So it is a very very strong firm. And आपको मैं honestly बताऊं, offshore से India practice is best, is 10 times 20 times better. देखो यहाँ पर मैं आपको जो learning मिलेगा, जो इस तरीका का मिलेगा, I feel so it is great. I think जो ultimately आपने मतलब आपने reject किया, सोचिए, आप सोच के देखिए कि you rejected India because of the global, and आपका भगवान ने ग्लोबल में नहीं होने दिया। ऐसे भी सोच सकते हैं कि एसडीसी और जीडीएस था, देन ऑल्सो गॉड जस्ट वांटेड यू टू बी इन इंडिया। So it is the God's decision ultimately that prevails, okay? He wanted you, and that is why just see the combination, okay? You got rejected in Deloitte USA also, and you got rejected in Yes, means sir. link did not came in SDC, and if you see something or the other happened where which was not in your control, okay? So that is the thing. About the version round, अगर next time से कभी apply करना होगा वर्जन राउंड में, वो हेडफोन लगाने से अच्छा रहता है, तो मैंने जितना सुना है, तो उससे शायद आपका इंप्रूव हो जाता हूँ वर्जन राउंड में Speaker ना। is mic also is very important. Mic is very important in version round. My माइक इज mic is not working properly. I'm using that wire earphones. That the mic for that wire earphones won't work properly. If we fumble also, it won't record. So it's very important version round. They have given me 2 chances, but due to the earphones problem, which I didn't check before, it costed me a lot. ओके, And that एयरफोन और was वो my सब। first interview. हाँ, दैट वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू। आई न्यू कि आप कितना डिसअपॉइंट हो गए, तो उसके बाद, हाँ, तो वही चीज है, हाँ, तो डेफिनेटली वो चीज है। पर ये चीज है कि आपको मोटिवेटेड रहना है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद का, आई बिकेम अ सीए, तो आई आल्सो गॉट रिजेक्टेड इन मेनी इंटरव्यूज इन द बिगनिंग, 10 to 15 इंटरव्यूज, एंड आई गिव ऑल द इंटरव्यूज। तो या दैट टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सोचना पड़ेगा कि यू जस्ट नीड वन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ, and keep on trying everywhere. Yeah, and always trust yourself when the things are not going well. I always say कि अपने आप को पे ट्रस्ट तब रखो, स्पेशली दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ कि हाँ, हम कर लेगा। आई जस्ट नीड वन लक, वन गुड अपॉर्चुनिटी, and maybe this time it will work for you. So that is the time when the things are not going well. It is very very important to trust and keep on applying everywhere, here and there, and the things will work out for you finally. Well, how important you felt is the articleship experience, because they are going to get into their articleship experience, client experiences. How important you felt that? Articleship, there will be compulsory question on the articleship experience. What are the clients we have dealt? What are the industries in which the clients are there? How the revenue is recognized for that particular type of industry? These questions are compulsory. So we have to be strong on our articleship experience, and we should be able to say it. Even though we had the experience, we should properly present that before the interviewer, so that they will get impressed there only, Great. mainly. Articleship is there, checking that is for sure. And about the Genpact, okay, you cleared Genpact, but it was R2R profile. Genpact, it Internal was audit. internal Internal audit. It audit. was okay, okay. The internal audit, P2P, O2C, R2R, those things. I think it came. What they asked in internal. P2P. P2P. What is P2P? What are the risks and controls? And O2C, what is O2C? They mainly focused on my articleship experience in the internal audit. So what are the clients I have dealt? We What are discussed the risks everything. I found? It was there in Excel sheet They also. are So more. all this.
Yes, what is the findings you had in your articleship experience and how you benefited the client? They focused mainly there only. We Uh, had all these they things, frauds, observations, yes, everything I discussed during the sessions every only. So yes, it was yes, yes, not a difficulty that you faced to clear the interview, except person. And in campus, it was all because of the link and all, right? I guess, no? Link is not coming. yes, yes, yes. You did not get the Mhm. mail. That was the Uh, thing. e- and even though I got the link in PwC SDC, he asked first the Aadhaar card, which I'm not carrying properly. I Okay. made him wait for some time, and Mm-hmm. he got some irritated. One of the Okay. reason I and Okay. he asked some Excel skills. We should Mm-hmm. be able to say it. Mm-hmm. And apart from the technical questions, he mainly focused on the disciplinary questions like what if your colleague do something like what if your colleague shares some confidential information to the outsiders? How will you react to that? He focused mainly on those type of questions. Maybe he did not get impressed by my answers. So And that was little bit luck also. In campus, it is all about luck also, I feel. A different type of yes. questions are asked where you cannot have to prepare also. They ask common sense question, a different type of questions they are asking to everybody. Mm. So it is even in audit profile, they're asking on transfer pricing also to some candidates. So it Ah, is very difficult. So it is very difficult in campus what questions they can ask because most of them, maybe, I don't know, they are not CA also. So they don't know what to ask. They ask anything. I don't know what okay. they can ask you anything in a campus. They can ask you anything because there is no structure out there. So they might ask you anything, personal question, behavior question, and little bit you can say because there's so much of competition. Also, so many CAs are coming in campus. So it is more. I think so. Luck plays a big role in campus. Yeah, I think so. In off campus, I feel hard work and preparation matters a lot, especially India profile Yes, where they are yes. because they are taking good time to evaluate you. There are more rounds, but in campus because things happen so quickly, so they don't have that much of time to evaluate you properly. So it is more on luck in campus, and in off campus it is more of a hard work and preparation. Some cases it can be the other way around, but yeah, in campus luck plays a big role. Your preparation and luck, both the things play a big role out there. So because you have to make sure that your impression is very good in front of the interviewer. And luck always, I always say, like campus में luck ज़्यादा काम करता है. Link is not coming and that not coming. And that can be the case, I think so. I think it is great. Okay. So what are the, I think I have to ask, like I asked to everybody, like what are those mistakes that you felt that you made in this journey after clearing CA, which you would like ki no other CA fresher should make? Did any mistakes like Okay. you felt, huh? First, be prepared. You'll get interview call at any time, and you won't get the chance to get prepared after getting the interview call. And be ready for all the rounds which you are going to face. Maybe, like in my case, I was prepared for the technical rounds, but I'm not prepared for the Versant. I don't even know how Versant round will be. So I failed there. So be ready for everything, every round. And not apart from the technical questions, you should be able to have some knowledge about the present trends. Like in one of my interview in Wipro second technical round, he most focused on the knowledge I had in the present economic conditions, Uh, present like US burning Bank, issues. US Bank Hindenburg report, But this type of, uh, they can these ask on anything. yes, Adani cases on Uh, Adani, those he mainly focused there. And Current also if affairs you are go very for the important. industry, Hmm. if you go for the industry, so prepare very good, like have a good information about the company you are facing. And financials must. If you are not explaining the financials properly, straight away rejected. Uh, this is one point where I missed in mainly in Wipro interview second round. And be ready with like Aadhaar card and all, which and also the HR rounds. We neglect the HR questions mainly. And don't This rely is on the also very. campus. Don't rely on the campus. And don't rely on the campus. This is very, very, Don't very rely on, important. don't rely on campus. I say be humble. The moment you become CA, that is the best time that you'll get a lot of opportunities. And that time, Hmm. don't be choosy and try to get some offer letters.
That is the time when you are clearing CA, that time you get lot of vacancy, job vacancies. After 3 months, after the campus is over, vacancies will go away. And then you will have to find out vacancy. So this is the trend I have seen in the last 5 years. When you become a CA, you will get lot of vacancies. And that time, if you just party and all you do, then you can be in trouble. And after campus, if Yes. you try to find out vacancies, you will not get that much. You will get very few. And after 6 months, there will be gap in the CV, and then the HR will ask you why you did not get selected in the campus. What happened? What He happened in asked six this. months? Yes, yes. These questions will be asked: why you did not get campus goal? Why you did not clear interview in the last? What were you doing in the last 6 months? And that is why I always say, ki, be proactive, be humble, try to give as much interviews as possible. Before the interview, make sure you prepare very well. They will not ask you simple questions. CV is a very important thing. I think so. CVs I have seen in the most of the cases, 90% CVs are not up to date. They have not properly explained their articleship experiences. They just write state audit. But in the state audit, what have you done properly? That is not explained. Internal audit, they have not explained. They just focus on GST or direct taxation. Now you have to understand the direct taxation market is not that big. There is not vacancy in direct Yes. taxation. GST also the market is not that great. Okay, so the vacancies you not get out here. So you have to make sure that you make one CV of state internal audit experiences, one CV make of direct indirect tax experiences. Many CA come to me and they say me that I don't have state audit experience or internal audit experience. I don't have direct tax experience or GST experience. It does not really matter. You have to make sure that you show experience. Many chartered accountants without even experience also, they have shown experience and they have cleared the interview. You have to make sure that if you don't have any experiences, then do courses. You need to do courses. Take my course, any course, but you need to do proper course, state audit, internal audit, direct indirect tax, so that the interviewer might feel that you know about it, because they will not take you as a fresher now. They will take you only on the basis of you know the subject very well and you have practically applied it in articles. If you give them theory answers straightforward, you will be rejected. So that is very important. So you have to analyze yourself. Ki, have you done your articleship properly? If you have not done your articleship properly, you need to get into mentorship strongly, I say. Otherwise, it is very, Yes. very difficult for you to get into a job in the current market situation. Unless and until you're extremely lucky, I don't know. But if you have not done your articleship properly, then you have to get into some mentorship. Second, if your communication skill, English speaking is weak, you have to get into. You have not done any public speaking course, you have not done debate, elocution, or something, you have to get in. If your mindset is not clear where to go, where to not to go, you have to take it. You don't have any networks, you have to take it. You don't know how to prepare a portfolio in LinkedIn, resume, how to prepare it, everything. If you're getting rejected in 3 to 4 interviews, you have to take mentorship. It is very, very important, because if you try to make all the mistakes at your end, then it will become you have to teach to others later on. So the make sure that you don't do all the mistakes at your end. Nowadays I see a big mistake everybody person does is that they glorify the failures. It is good to fail, okay, but it is very important to learn quickly from mistakes. Now, the moment you make a mistake, it's okay to make mistakes. I always say if you make mistake, it is very okay. But the moment you make a mistake, you have to learn from that mistake very quickly, because life will not give you too many chances to make mistakes. I say this very well. Yes. It is not like a CA final exam where you can get attempt after attempt, attempt after attempt, 9 attempts, 10 attempts, 12 attempts, 13 attempts. This is an interview preparation. If you don't clear the interview in the first 6 months, there will be a lot of questions on you, that on your capability, why you did not clear the interview in the first 6 months. And I've seen, okay, many first attempt chartered accountants, still now they are not getting a good job. They are getting into 20, 25,000, 30,000 CA firm, first attempt chartered accountants. And irony of the situation, they are the ones who regret that much. Rather than 6 attempts, 8 attempts, 7 attempts, they will feel ठीक है मेरे को 7, 20, 30, 40,000 का भी लग गया, कोई बात नहीं है. But just imagine जिसका first attempt में CA clear किया है. I have seen so many first attempt chartered accountants जो 20, 30, 35,000, 40,000. This is the range of salary they are getting after clearing CA. क्यों? Because उस first attempt था, उसको लगा उसका दरकार नहीं है. And first 6 months he did not get into a good job. And later on वो सोसाइटी में दिखाने के लिए भी उसको दिक्कत हो रहा है. Later on he is doing practice. प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस भी नहीं चल रहा है. तो दैट इज द प्रॉब्लम. तो यू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया, आर्टिकलशिप ठीक नहीं है, आर्टिकलशिप अच्छा भी है, तब भी मैं बोल रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट इनटू अ गुड जॉब. तो कैसे? बिकॉज आपके ऊपर में ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, फैमिली की तरफ से भी आ गया, रिलेटिव की तरफ से भी आ गया.
देयर इज अ बिग रिस्पॉन्स अनलेस अनटिल आपको जॉब नहीं करना है कोई भी कीमत में, आपका पूरा बेस स्ट्रांग है, यू नो कि आपको क्या करना है, अलग बात है। पर आपको पता है आपको कुछ नहीं करना है, यू नॉट फिगर्ड आउट योर लाइफ, ओके, आप फिगर आउट नहीं किया है, आपको जॉब ही करना है, यू नो अबाउट इट, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको जॉब चाहिए नेक्स्ट 30 days, 40 days, 60 days में। इट इज यू आर नॉट इन द पोजिशन टू एक्सप्लोर टू मच। अगर आप ज्यादा एक्सप्लोर करने का कोशिश करेगा और 6 महीना आपका निकल गया, आपके ऊपर में इतना सवाल उठेगा, आपको जॉब निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। करंट मार्केट सिचुएशन में 1.5-2 साल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि आपको मेंटर का दरकार जरूर पड़ेगा। अगर आप ये आप अगर वो माइंडसेट से है कि हम लेट्स एक्सप्लोर लेट्स एक्सप्लोर लेट्स एक्सप्लोर, आपका टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यू विल बी इन बिग ट्रबल, आई ऑलवेज से दिस। आपको ट्रबल पता चलेगा, और आपको ट्रबल पता चलेगा आपको पता जब चलेगा जब आपका मे बी 6 महीना चला गया, 10 महीना चला गया, फिर आपको लगेगा, फिर फैमिली वाले प्रेशर देने लग जाएगा, सबसे बड़ा फैमिली कि कहीं पर तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, यू हैव टू ज्वाइन समवेयर। डेफिनेटली फैमिली प्रेशर देगा, आपका नहीं दिया तो बताइए, फैमिली प्रेशर कहीं ना कहीं तो देगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, कुछ का नहीं देता है, ठीक है, टेक टाइम, बट सम फैमिलीज विल पुट प्रेशर। आपका दिया था वैसे? आप कैसे My 3 महीने? parents were very my हाँ, parents are very supportive, but my relatives used to ask me, "You have हाँ, passed in January, but you are not able to join in the job." My definitely. relatives and friends are more Relatives. excited than me. In fact, I'm telling about myself, okay? I left my 5 year job, okay? I'm doing side hustle, I'm doing this, okay? A lot of questions are asked by relatives only. And we are Agarwals, so a lot of questions. What are you doing? What are you doing? What are you doing? So this is something relatives will keep on asking, what are you doing? So this is something a very difficult thing to explain them, and they don't understand also what we are doing. So that is a thing, and still now I don't understand. But job is said to be if you have job, then you are respect. You have very good respect in the society. That is, I feel so. This is something also there, and initially you have to get into a job also. I always say कि initially, और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जॉब में आप जब घुसो तो पैकेज मत देखो, और इवन कंपनी भी कुछ हद तक आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पर व्हाट यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज इज द लर्निंग। और अगर आपका लर्निंग अच्छा होगा तो अर्निंग तो अच्छा होगा ही होगा लॉन्ग टर्म में। पर मेरा मानना ये है, इफ योर लर्निंग इज वेरी गुड, ओके, इन द इनिशियल फेज ऑफ योर सीए फ्रेशर, आपको अगर 2-3 साल बाद भगवान ना करे आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, बिकॉज ऑफ ले ऑफ सीजन इज गोइंग ऑन, आजकल हर किसी को निकाल दिया जाता है, वो आपके पास लर्निंग रहेगा, एंड दैट लर्निंग विल हेल्प यू टू डू लॉट ऑफ रिस्क, आपको रिस्क लेने में हेल्प करेगा। आप अपना प्रैक्टिस चला सकता है, कुछ भी कर सकता है, एजुकेशन सेंटर खोल, कुछ भी कर सकता है। कैसे कर पाएगा? बिकॉज आपने लर्निंग की है। क्योंकि जो पैकेज होता है, पैकेज कितना ही मिलता है, 8, 10, 15 लाख, इतना तो इतना ही मिलता है, वो आपका खर्चा पानी में निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। पार्टी करेंगे, थोड़ा बहुत जाएंगे, घुमा फिरी करेंगे, व्हेन यू बिकम सीए, ऐसा बात तो नहीं है कि बैठ जाएगी जाके, तो वो पैसा है वो तो कब का खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली आप देखेंगे 2-3 साल बाद आपका अगर लड़का है तो उसका ऐसे ही खर्चा हो जाएगा। पर लड़की है तो हाँ, फिर भी मान सकते हैं आप लोग सेव कर लेगा थोड़ा बहुत, पर जनरली सेविंग ज्यादा नहीं होगा। बहुत जन सोचता है कि सेविंग करने का कोशिश करेगा सीए का जो 2-3 साल का पैसा में, तो सेविंग ज्यादा नहीं होता है जनरली, समझ रहे हो? इनकम टैक्स आपका ले लेगा बाकी का पैसा, अगर आप टैक्स सेविंग नहीं किया तो सेविंग ज्यादा नहीं होगा। तो क्या चीज जरूरी है 2-3 साल? मैं हमेशा ये बोलता हूँ, पहला 2-3 साल आप इतना अच्छा नॉलेज गैदर कर लो कि उसके बाद आप पैकेज इंक्रीज करा पाओ नेक्स्ट 3 to 5 years में। मैंने कितना लोगों को देखा है जो ऑडिट बैकग्राउंड से था, ड्यू डिलीजेंस में घुसा, वो लोग अभी लंदन में है, एंड दे आर गेटिंग 80 लाख 1 करोड़ सैलरी। एंड दैट इज वाई ऐसे 5 to 10 years डाउन द लाइन आपका बहुत अच्छा सैलरी इंक्रीज हो सकता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में लर्निंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो चीज बहुत जरूरी है। तो स्टार्टिंग का जो पैकेज है वो आपका बेस नहीं, वो सब कुछ नहीं निर्भर करता है। स्टार्टिंग का पैकेज इज जस्ट अ स्टार्ट। आपका जो मेन चीज है, आपको एक 2-3 साल आपको नॉलेज बहुत स्ट्रांग लेवल का गैदर करना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनिए। एक सब्जेक्ट है, जीएसटी हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, ट्रांसफर प्राइसिंग हो, स्टेट ऑडिट हो, इंटरनल ऑडिट, ट्राई टू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। और आप देखिए 2-3 साल बाद आपको इतना अपॉर्चुनिटी मिलेगा इंडिया में, ओवरसीज आपका यूएसए, कनाडा, हर जगह, यूके, दुबई, ऑल ऑल प्लेसेस देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज लेटर ऑन। सीए फ्रेशर को थोड़ा कमती मिलता है, पर आप जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस गैदर कर लेगा और आपको बहुत कुछ आएगा, तो आपको देखना आपको काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और एक और चीज प्रॉब्लम क्या है, अपना करिकुलम भी उस तरीका का है कि हम लोग का तो सीए करिकुलम है, वो आवर्स करिकुलम इज बेसिकली थ्योरी, पूरा थ्योरी है। और आर्टिकलशिप कितना ही आपसे कर लेगा, आर्टिकलशिप में 3 years आर्टिकलशिप, यू डू 1.5 years तो स्टडीज ओनली यू डू, एंड 1.5 years हाउ मच वर्क यू विल डू। तो यू आर एक्चुअली नॉट प्रैक्टिकली ट्रेंड। मेरे को जो हमेशा लगता है, कुछ कुछ आर्टिकलशिप अच्छा होता है, but generally on an average you are not that much of practically trained person. So first 2 years, once you clear chartered accountant, you have to focus on a very rigorous type of training, जहाँ पर आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा कम बेसी हो तो चलेगा, आपको ट्रैवलिंग करा रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लाइंट एक्सपोजर आपका
एकदम बहुत बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप वो चीज में अगर ध्यान दे दिया लर्निंग में, आई एम टेलिंग यू, आपको 2-3 साल के बाद पैकेज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। बिकॉज लोग आपको जो अभी अभी जो जॉब दे रहे हैं, फिर भी मैं बोल सकता हूँ कुछ हद तक आपका ठीक है, सीए प्रेशर है, वो भी नहीं है आज का डेट में। आज का डेट में पूरा नॉलेज देख के ले रहा है। बट आपको जो आप ये सोचो कि अभी एज सीए फ्रेशर आपको जॉब निकालने में इतना दिक्कत हो रहा है, तो आपका 2-3 साल बाद तो कितना ज्यादा दिक्कत होगा, राइट? करेक्ट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अगर लर्निंग में अगर बहुत स्ट्रांग नॉलेज रखेगा कि एक स्टेट ऑडिट है, ये इंटरनल ऑडिट है, जो भी सब्जेक्ट है उसमें अगर डोमेन एक्सपर्टीज नॉलेज रखेगा, तो देखना आपको जॉब में बहुत इजी होगा स्विच करने में लेटर ऑन। आपको इजीली किधर भी जॉब मिल जाएगा, आप कोई भी सवाल का जवाब दे पाएगा। और मैं तो ये बोलूंगा कि आपको जॉब भी नहीं करना पड़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा यू विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। तो मेरा सजेशन, जो भी सीए होता है वो हमेशा पैसा के पीछे भागता है, हो सकता है कि इससे पहले पैकेज इधर मिल जाएगा उधर मिल जाएगा, पर आप मेरे हिसाब से लर्निंग के पीछे पहले भागिए कि आप देखिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपका पहले जो टेक्निकल नॉलेज इंप्रूव करिए, सेकंड थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल, यू हैव टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। पर्सनैलिटी इंप्रूव करिए, ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करिए। भोजन ड्रेसिंग सेंस के कारण भी रिजेक्ट हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी, टेक्निकल नॉलेज, अगर ये 3 चीज में आप अगर अच्छा से काम कर लेंगे, फिर नेटवर्किंग इंप्रूव करिए, विजिबिलिटी इंप्रूव करिए, सोशल ब्रांडिंग इंप्रूव करिए। अगर ये 3-4 चीज में अगर आप इंप्रूवमेंट ला देगा, ये 2-3 साल में अगर आप ये चीज में ऊपर में काम करिएगा, क्या क्या चीज में बोला, टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, नेटवर्किंग स्किल, सोशल मीडिया, सोशल ब्रांडिंग, अगर आप 2 साल, अगर 2 से 3 साल अगर इसके ऊपर में 5 एलिमेंट के ऊपर भी काम कर लिया, उसके बाद आपको आई डोंट थिंक सो पैसा के लेके आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। पर अगर आप अभी ये टाइम में सेविंग्स एंड पीपल आर थिंकिंग अबाउट रॉन्ग रॉन्ग थिंग्स, क्या क्या मेरे को पता है क्या क्या माइंड सेट रहता है कि हमको घर से काम करना है, मेरा सेविंग्स इतना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखता है, मुंबई में जाएगा तो मेरा पीजी का भाड़ा इतना लगेगा, जो पीजी का रेंट होता है मेरा इतना लगेगा, एंड दिस इज नेगेटिव फैक्टर्स, ओके। दिस आर नेगेटिव फैक्टर्स बिकॉज आपको, आप मुंबई में अगर जाएगा, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मुंबई जाने का, तो मुंबई आप जाएगा तो आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग होगा आप सोच भी नहीं सकते। यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मुंबई, वहां पर आपको अलग अलग लोग मिलेगा, आपको अच्छा ना अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तो इनिशियल लेवल में आप ये मत देखिए कि आपको थोड़ा सा आपका कम बेसी भी अगर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो रहा है, तो दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। अभी इनिशियल लेवल में आपको पूरा होलिस्टिक एक्सपीरियंस अच्छा दिखना है, तो वही चीज है। तो आई थिंक दिस विल रियली हेल्प। आपके एंड से कुछ लेकर आपको लग रहा है कि क्या चीज इंप्रूव कर सकता है? यू ऑल्सो सीन लॉट ऑफ सीए फ्रेशर, यू सीन योर सीनियर्स आल्सो, तो आपको क्या लगा, लाइक व्हाट यू कैन से टू अ सीए फ्रेशर जिसको अभी जॉब नहीं मिल रहा है मार्केट में? Like after I cleared the final, I mean, after getting the result, I was so blank what to do, like how to apply. Even though I updated my LinkedIn and Naukri profile, but I'm so confused where to start and what the questions will be asked. And after joining this mentorship, I improved myself in technical part. Even though I know the concept, I'm not able to express it like Impressive. in a good manner, like in a structured manner. I'm not able to express it, which I learned here very much. And I had a good articleship exposure in statistical and internal. I don't know the terminology properly. Like I know the basics, but the terminology in the structured way I don't know. So which I improved a lot, which all every fresher should improve. Maybe because of that, so many are not able to clear their interviews. And also concentrate on the HR questions too. And as I don't rely on the campus, apply rigorously everywhere. I applied like anything everywhere. And then only you start getting the calls. When you appear for the interview, you will know the mistakes. Even though you prepare a lot, if only after facing the interview, only you can know your mistakes. And go for the mock interviews, which we will have मॉक in the इंटरव्यू इज वेरी, mentorship. हाँ मॉक इंटरव्यू इज वेरी Uh, इंपॉर्टेंट। मॉक इंटरव्यू ना तो बहुत मुश्किल है, तो मॉक इंटरव्यू सबसे जरूरी होता है बिफोर द मेन इंटरव्यू। और आपका फ्रेंड भी यहाँ से ही लिया था, तो उनका फ्रेंड से आप आया था इधर में, अबीज गाउत आई one गेस, of रिमेम्बर भी है अबीज गाउत, yes, राइट? तो वो भी इधर ही लिया था, यहाँ पर से हुआ। एक चीज मैं और चीज बोलूंगा जिसका he आर्टिकलशिप got अच्छा रहता है। placed. हाँ, हाँ, तो मेरे पास भी अभी, हाँ, ही गॉट प्लेस बाय अस ईवाईटीज। तो एक चीज मैंने और देखा है जिसका आर्टिकलशिप अच्छा भी होता है, तो वो अपना सीवी में बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट कर देता है सीवी में, मतलब इतना ज्यादा लिख देता है इंडेस में, इतना सारा इंडेस का नंबर लिख देता है जिसका उसको आइडिया भी नहीं है, ऐसे ही लिख देता है सीवी में। ये बहुत बड़ा मिस्टेक करता है, बिकॉज द मोमेंट यू राइट टू मच इन सीवी, जो आप नहीं करके रखा है, आप ये भी नहीं कि आपने कुछ भी मत लिखो, वो तो बहुत गलत है, पर इतना भी मत लिख दो सीवी में कि आपको ग्रिल करेगा तो आप आंसर ही नहीं दे पाओ।
तो वो भी एक बहुत जरूरी है। तो बहुत जन सीवी में इतना कुछ लिख देता है जो करके भी नहीं रखा है। अब यू बिकॉज नॉट डन द सीवी, और वो तो उससे पूछेगा तो आपका ऐसे ही वो आउट हो गया, तो लगेगा अपन ऑनेस्टली नहीं बनाया अपना सीवी को। तो मेक श्योर कि सीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकलशिप नहीं अच्छा है तब तो आपको लेना ही है, आर्टिकलशिप अच्छा है तब भी आपको बहुत ध्यान से सीवी बनाना है। वो सीवी से आपको बहुत सवाल पूछा जाएगा, एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी वेल। बिकॉज होता है ना, आर्टिकलशिप आप बहुत पहले किया रहता है, तो वो भी एक कारण हो जाता है। आर्टिकलशिप करके आपने, हो सकता है सीए बनने में 2 साल लग गया आर्टिकलशिप किया, तो अब आर्टिकलशिप भूल गया पूरा। तो वो भी एक बहुत प्रॉब्लम देता है जब आप ये सब इंटरव्यूज में जाता है, कि वो लोग ग्रिल काफी करते हैं अच्छा खासा। आई थिंक इट वाज ग्रेट डिस्कसिंग विद as यू। हाँ बोलिए। As sir said in the BDO, in the second technical round, sir, he asked me why you didn't get placed up to now, why you didn't clear the campus, why you didn't apply in the Big Four, why you choose Big Five. Like these questions, you should be prepared because. What you said, it was difficult actually. What you said? So I said that PwC India I cleared, sir, but I waited for the campus, and I said the fact this happened. Yes. That's why it didn't go well. So I said the fact. He said okay, okay then. No, you're honest. The I, honesty prevails. Good. It's okay to be mm, honest. So these are the questions. This is a very difficult question. Ki why did not do this? Why you're joining this and this? So mm, it is a very difficult question for you. That is why I say कि जो भी अभी सीए अभी जिसका भी वीडियो देख रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रिपेयर अच्छा से करिए, पॉजिटिव रहिए, अप्लाई बहुत करिए। अप्लाई भी बहुत ज्यादा करना है नहीं कि अप्लाई नहीं करेंगे। यू हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑल्सो। ये नहीं कि आप अप्लाई नहीं करेंगे, आप एक दो जन को दे दिए सीवी हो गया। अगर बीडीओ है तो 50 लोगों को दीजिए, पीडब्ल्यूसी में भी बहुत लोगों को दीजिए। जितना भी आपका रेफरल्स है लिंक्डइन में है, हर जगह जितना हो सके अपना सीवी को रेफर कराइए। सीवी को पहले चेक करा लीजिए कोई एक्सपीरियंस मेंटर से। और हमेशा पीयर्स से मत लीजिए राइट। पीयर्स का आपको गलत एडवाइस दे देगा। आप लेना है तो एडवाइस उससे लीजिए जो फील्ड में काम किया है। तो सीवी भी उनसे कराइए जो आपका है। अब बहुत जन सीए फ्रेशर ही सबसे बड़ा गलती करता है कि वो अपना ही सीए, जिसको अपना ही दोस्त होता है उससे ही एडवाइस लेने लग जाता है, कहाँ पर ज्वाइन करे, कौन सा मेंटरशिप ज्वाइन करे। अब बहुत सारा मेंटरशिप में आपका 500 सीए में एक सीए रहता है, तो वहां पर कोई आपको गाइडेंस मिल रहा नहीं है, ना प्रैक्टिस हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो वो भी आपको ध्यान देना है कि आपको अपना पीयर्स का नहीं सुनना है। और पीयर्स का आप डेफिनेटली सजेशन ले सकते हैं, पर आपको एक्सपीरियंस का ज्यादा सुनना है। मान के चलिए आपका कोई सीनियर है जिसने जॉब कर रहा है, तो वो आपको ज्यादा बेटर एडवाइस देगा जो जॉब कर रहा है, कंपेयर टू समबडी जो भी आपका तरह जॉब खोज रहा है। तो यू हैव टू कैलकुलेट वेल कि हाँ आप किसका सजेशन ले रहे हैं। तो सजेशन देख के लीजिए किसका लेना है, जो आपको सही सजेशन देगा। एंड देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ कैलकुलेटिव कॉल। इसलिए एक्सपीरियंस मेंटर हमेशा आपको सही सजेशन देगा। तो एक्सपीरियंस को हमेशा इसमें इग्नोर मत करिए, बिकॉज भोजन ये भी गलती करता है, वो गलत जॉब में घुस जाता है। जिसको गलत जॉब मतलब उसके लिए गलत है जॉब। आई ऑलवेज से कि जॉब इज ऑलवेज अ जॉब। तो कोई भी जॉब खराब नहीं होता है, पर वो पर्सन के लिए वो जॉब सही नहीं है। वो पर्सन का जो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी के हिसाब से वो जॉब सही नहीं है, उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से वो जॉब सही नहीं है। तो ये भी यहाँ पर मैं भी एक्सपीरियंस मेंटर को आप बताएगा कि हाँ सर मेरा ये प्रायोरिटी है, इसमें लॉन्ग टर्म गोल, इसमें शॉर्ट टर्म गोल, आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सन, आई लाइक दिस टाइप ऑफ वर्क। तो वो आपको अच्छा से गाइड कर पाएगा। तो जॉब भी बहुत जरूरी है कि आपको सही जॉब मिलना बहुत जरूरी है। कहाँ पर आपको अब भोजन मेरे पास आता है सर आपको प्राइवेट इक्विटी में जॉब मिल जाएगा क्या, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स। अब प्राइवेट इक्विटी में मिलता ही नहीं है जॉब। अब आपको कौन बना रहा है तो फायदा नहीं है प्राइवेट इक्विटी में। और उनका बोलता है कि मेरा पहले फर्स्ट, और मैं बताऊं फर्स्ट अटेम्प्ट है, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट था, प्राइवेट इक्विटी में जॉब मिल जाएगा। आर्टिकलशिप नहीं करके आया है, आर्टिकलशिप बेकार अच्छा नहीं होके रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट सीए पर बोलता है हमको प्राइवेट इक्विटी में जॉब चाहिए, नहीं तो हम बैठने को रेडी है। तो वो तो गलत है ना। वैसे करने से तो, वैसे तो बेटा प्राइवेट इक्विटी का नाम अच्छा लग गया सर, हमको मैनेजमेंट कंसल्टिंग और प्राइवेट इक्विटी में जॉब चाहिए, नहीं तो हम वेट, आई एम रेडी टू वेट फॉर 8 to 10 months 11 months। आप और 8 to 10 months 12 months भेज जाएंगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे, तो वो भी एक है कि वो जिद भी अड़ जाना वो गलत बात है। और यहाँ पर मैं गलत गाइडेंस देने वाला बहुत है कि हाँ आपका प्राइवेट इक्विटी में लग सकता है, आपका मैनेजमेंट कंसल्टिंग में लग सकता है, आप ये कोर्स कर लो लग सकता है। आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं आपको कहाँ पर लग सकता है। इसलिए एक्सपीरियंस मेंटर का बहुत दरकार है कि आप गलत जॉब में नहीं घुसे। आपको प्राइवेट इक्विटी का प्राइवेट इक्विटी पता है क्या होता है, वो नहीं पता, प्राइवेट इक्विटी पता है बस। ये पता है कि पैसा बहुत अच्छा मिलता है प्राइवेट इक्विटी में, काम क्या होता है वो नहीं पता। मैनेजमेंट कंसल्टिंग, आई वांट टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये ज्यादा करके मैंने जो प्रॉब्लम देखा है ये साउथ में ज्यादा देखा है कि यहाँ पर में ज्यादा करके वो लोग जिद में अड़ जाता है कि हमको यही प्रोफाइल चाहिए, ये प्रोफाइल नहीं मिलेगा तो हम बैठ जाएंगे। वो भी गलत है। आपको डाइवर्सिफाई करके चलना है। अगर ये प्रोफाइल नहीं मिला तो ये प्रोफाइल, ये नहीं मिला तो ये प्रोफाइल। आई हैव टू मेक श्योर कि आई गेट वन ऑफर लेटर ऑफ अ वेरी गुड कंपनी, सीटीसी मोर देन 8 लाख 10 लाख, ऐसे करके रखना पड़ेगा फिल्टर क्राइटेरिया।
और मेरे को ज्वाइन करना है। ऐसे नहीं कि बैठ जाएगी, अगर आप 6 महीना बैठ जाएगा, इफ यू स्टेट फॉर 6 मंथ्स to 8 मंथ्स, देन आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। एचआर आपको बहुत तंग कर लेगा फिर उसके बाद तो। ऑलमोस्ट डिफिकल्ट कर लेंगे आप अपना सिचुएशन कि आप क्या बोलेंगे इसको, हेल्थ इश्यूज हो गया, कितना ही हेल्थ इश्यूज का सर्टिफिकेट मांगने लग जाएगा, आपको दिखाइए क्या हेल्थ इश्यूज हुआ। हम्म। तो वो लोग सर्टिफिकेट मांगेगा, वो लोग भी चला के ये बोलेगा हेल्थ इश्यूज हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ज्यादा, आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए आपको अगर मान के चलिए ये प्रोफाइल में जाना है, वो प्रोफाइल में जाना है, तो एक मेंटर को पूछिए कैसे जा सकता है। गूगल करके आपको नहीं पता चलेगा, गूगल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना चीज है गूगल में, आपको गूगल यूट्यूब करके कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड दिस इज अ डिसीजन ऑफ लाइफ। एटलीस्ट 2-3 साल तो जॉब करना है, उसके बाद आपको कुछ और करना है तो करिए। मैं जब सीए बना था, तो मैं उस टाइम कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो आई ट्राई टू हेल्प विद माय सिस्टर, जो मेरे कजिन था, सिस्टर्स था, यहाँ पर हुआ नेटवर्किंग किए, मुंबई में गए, थोड़ा सा तो किए, थोड़ा लिंक्डइन में हमने 12-12 साल, जिसका 20-20 साल का एक्सपीरियंस था, मेंटर था, वो लोग से कनेक्ट किए। तो हमने अगर 50 लोगों से कनेक्ट किए, तो 10 लोगों ने थोड़ा सा टाइम दे दिया संडे को। तो वैसे करके करियर के ऊपर हमें गाइडेंस मिला। अदरवाइज दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको गाइडेंस मिलेगा सही से। मैंने तो ऐसे करके अपना नॉलेज इंक्रीज किया कि कहाँ पर कैसे सही रहेगा। और अल्टीमेटली मेरा सबसे बढ़िया बात ये था, आई फेल्ट कि हम हमें से हम्बल था, मुझे कोई नौकरी चाहिए था, कोई भी जगह लग जाए, ऑलवेज हम्बल। तो मेरे लिए ये सबसे बेस्ट रही है कि हम जब सीए बना था, मेरे को था कि 8 to 9 लाख से ऊपर कोई भी जॉब मिल जाए, आई वॉज ओके विथ इट। चाहे बिग फोर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, कोई भी जगह हो, आई एम ओके विथ इट। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट काम कर गया। ये चीज हम सबको बोलता है कि एटलीस्ट ये नहीं बोल रहा कि एकदम इसमें ओके भी थी, तो मेरे लिए काम बढ़ गया। और अभी हम मैं देख रहा हूँ, अगर जो हम्बल रहता है उसका काम जल्दी होता है। जो थोड़ा कोई भी टाइम पास कर ले, कि सोचता है कि हमको ट्रांसफर प्राइसिंग में जाना है, हमको एमएनए टैक्स में जाना है, बहुत जन ऐसे करके बैठ जाता है, वो गलत हो जाता है। तो वैसे मत करिए, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके चलिए, और एकदम मेंटर का दरकार पड़ता है। अगर मान के चलो आर्टिकल से एमएनए टैक्स में किया है, तब आपका जिद सही है कि चलो एमएनए टैक्स में जाना है हमको। पर आर्टिकल से भी नहीं करके रखा और आप जिद में अड़ गया, तब तो गलत पड़ जाएगा आपको, और बाद में आके आपके लिए अफसोस रह जाएगा। तो वो सर नहीं करना है। ठीक है, तो आई थिंक दिस वाज ग्रेट डिस्कशन, एंड योर इनसाइट्स विल रियली हेल्प। थैंक यू सो मच, एंड योर फीडबैक will mean a lot to us. Thank you so much, and you can visit my channel, Thank you, sir. guys. Thank you.